So, do you all know what is a natural gas? To what do we call natural gas? So we have something called as CNG, and CNG का full form होता है, it is compressed natural gas. So CNG is compressed natural gas, and this is used as a fuel. This is used as a fuel in vehicles. So over here, what we are going to see is कि how can CNG generate the electricity. So a rough flowchart that always I have been drawing. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि this time the earlier to what we saw was that initially we used the thermal power plant, that is coal, for the generation of electricity. Next that we used was the atomic energy for the generation of electricity. Over here we are using the CNG or the compressed natural gas for the generation of electricity. So this will also have a setup which is quite easy compared to the other things. बहुत easy concept है ये, हमारा फटाफट हो जाएगा CNG का. So first let me explain you कि types of gases में CNG होता है, then we have something called as LNG and LPG. So three things are there. So CNG, LNG and LPG. Now CNG is compressed natural gas, LNG is liquefied natural gas, and LPG is liquefied petroleum gas. So this LPG, if you all know, ये तो हमारा LPG जो है, wait. So I'm talking about the LPG, and the LPG is filled inside the cylinder. हमारे घर का जो सिलेंडर होता है उसमें LPG भरा हुआ रहता है. So this is the LPG, and which we use for the cooking purpose. And I can tell you some other vehicles. कुछ ऐसे vehicles है जो actually वो जो घर का सिलेंडर होता है उससे गाड़ी चलाते हैं. So the car works little slower. It does not have that much power of pickup and all that, but still it works. Mostly ये ऑटो रिक्शा वाले यूज करते हैं. CNG is the compressed natural gas, which is definitely used by the vehicles because it is cheap. ये 45 to 50 rupees per kilo मिल जाता है, whereas if you see the petrol it is 75 rupees per liter. Diesel is approximately 65 to 70. So CNG is quite cheaper. First of all, it is cheap, and second thing is it is quite concerned with the green energy. मतलब green energy का part तो नहीं है, but it releases very less fume, as I have already discussed. कि जो CNG गैस है वो बहुत कम फ्यूम निकालता है because the name itself is the natural gas. It is compressed natural gas. So I hope we are clear with the three types of the gases, that is CNG, LNG and LPG. This is one part which is showing up the arrangement for the combustion of the natural gas, or I can tell shortly कि what I am trying to do over here is we are producing electricity using the natural gas. तो काफी इजी सेटअप है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें तुम लोगों को तीन मेन कंपोनेंट्स दिखेंगे, इनफैक्ट चार. एक तो है कंप्रेसर, दूसरा है टर्बाइन, तीसरा है जनरेटर, एंड फोर्थ वन इज कंबशन चेंबर. नाउ अंडरस्टैंड टर्बाइन एंड जनरेटर. वी नो द फंक्शन ऑफ टर्बाइन एंड जनरेटर. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इनटू टू पार्ट्स. कंबशन चेंबर जो है यहाँ पे हमारा फ्यूल रहने वाला है, दैट इज CNG, एंड सम एयर विल बी देयर. कैन एनीवन टेल मी कि कंबशन चेयर में एयर का क्या काम है, हवा का क्या काम है वहां पे? सो द एयर विच इज रिक्वायर्ड, it will be, I can say, the air which is present in combustion chamber. First of all, we have a fuel, and we know that the fuel cannot burn in absence of oxygen. So why are we giving an inlet to the air? So that it can prove to be completely combusted, because अगर oxygen absent रहेगा तो combustion नहीं होगा. So this was the most important thing to understand. बाकी सारा point यहाँ पे easy है. तो now I will trace the path by which we are going. तो सबसे पहले तो ये natural gas हमने डाला हुआ है into the combustion chamber.
देन आफ्टर दैट नेचुरल गैस हमने कंबशन चेम्बर में डाल दिया है. वी हैव टू पुट द एयर. See, trace the air from where the air is coming. So we have fresh air which is coming all the way from down to the compressor and from the compressor to the combustion chamber. So now into the combustion chamber we have got our fuel, that is natural gas, and then other thing we have got is oxygen, that is from the fresh air. So now the two things have combined in the combustion chamber, and as the name suggests, the things are going to combust, it is going to burn. So एक बार फ्यूल जब बर्न हुआ, so definitely it will produce a lot of heat energy, and that heat energy is bombarded on the turbine. So it is bombarded on the turbine, because of which the turbine will rotate. Now one thing you all have to understand कि अगर turbine rotate कर रहा है because of the heat, so majority of the heat will be lost in the surrounding. यहाँ पे लिखा हुआ है कि the heat wasted is 67%. Why are they mentioning this? Because if the fan is rotating, so the majority of the heat will be distributed in the environment and very less will be passed on to the generator. So इसमें हो क्या रहा है, 67% जो हीट है वो तो वेस्ट हो जा रहा है because it is getting mixed up with the environment. Only 33% passes to generator, which is used for the production of electricity. So this is the entire setup how the things work using a natural gas. So I can say जो हमारे cars होते हैं which work on CNG, जो CNG का बाटला बिठाते हैं, so it has less power, it has I can say less pickup. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका आधा एनर्जी तो एनवायरमेंट में घूम जा रहा है. वी कैन सी the waste heat is 67%, so that is why they are having a less power, a less pickup, but still they are considered to be more eco friendly. The reason behind this is एक तो हम लोग यहाँ से fresh air डाल रहे हैं, दूसरा यहाँ से natural gas डाल रहे हैं, so we are reducing the pollution. I give you option of three things. So एक तो मैं तुम लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ पेट्रोल का, next option I am giving you all of diesel, and third option I am giving you all is CNG, and fourth is the LPG. तो ये चार फ्यूल है जिसको मुझे अपने कार में डालना है. सो विच विल गिव द बेस्ट रिजल्ट और विच विल बी द मोस्ट पावरफुल फ्यूल आउट ऑफ द फोर. so चारों में से सबसे पावरफुल फ्यूल कौन सा रहेगा बताओ. ठीक है, तो सबसे पावरफुल जो रहेगा वो डीजल होगा. सो डीजल को मैं बोल देता हूँ नंबर फर्स्ट, मतलब सबसे पावरफुल. सेकेंड आई वुड टेल पेट्रोल, थर्ड में सीएनजी बोलता हूँ, और फोर्थ एलपीजी. सो एलपीजी इज द लीस्ट पावरफुल थिंग दैट कैन बी पुट इनटू अ व्हीकल. इसके लिए एलपीजी को हम एज अ कुकिंग गैस यूज करते हैं, बट नॉट यूजुअली एज अ फ्यूल ऑफ द व्हीकल. वाई डीजल इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द पावर? बिकॉज डीजल में मैंने बताया है कि कार्बन 18 तक रहता है, पेट्रोल हैज गॉट अबाउट 11 to 12 कार्बन्स, देन सीएनजी हैज गॉट 2 to 4 कार्बन, एंड दिस एलपीजी हैज गॉट अबाउट 3 कार्बन. सो बेसिकली जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है वो सबसे ज्यादा कंबशन होगा. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट एमिटेड विल बी सेम, इट विल बी मोर. सो दैट इज व्हाई डीजल इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. सो बेसिकली ये ऐसा है कि हमारे पास एक कंबशन चेम्बर है. समझो मेरा एक गाड़ी है जिसमें कंबशन चेम्बर है, और मुझे गाड़ी चलाना है तो उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा और डीजल और नेचुरल गैस वॉट एवर, बट देन देयर हैज़ टू बी अ कंबशन चेम्बर. फिर उसमें क्या होगा, दैट इफ़ आई पुट पेट्रोल और डीजल और सीएनजी, व्हाट इज़ द डिफरेंस? हमको मालूम है कि जो डीजल होता है दैट रन्स द कार एट मोर पावर, इसलिए जो ट्रक्स होते हैं हैवी वो डीजल पे चलते हैं, और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जैसे कि रिक्शाज, सो दे रन ऑन एलपीजी, बिकॉज द एलपीजीज एंड सीएनजीज दे हैव लेस पावर.
So that power is actually because of number of carbon. So because I am telling that डीजल जो है उसके अंदर 18 कार्बन होता है, यानी कि बहुत जो है कॉम्प्लेक्स है, सो इट हैज़ मोर पावर. एंड द CNG हैज़ गॉट ओनली 4 कार्बन. तो CNG और डीजल को कंपेयर करेंगे तो CNG वीक है. And that is why what I want to say is CNG is a weak one, so it cannot be used to run the buses or the trucks. वो डीजल पे ही चलेगा. एंड आई होप यू नो नाउ कि डीजल हैवी क्यों है, क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा है. और पेट्रोल, सो पेट्रोल हैज़ गॉट कार्बन ऑफ 14. पेट्रोल हैज़ गॉट 14 कार्बन. तो ये डीजल से थोड़ा कम हैवी है. आई होप वी आर क्लियर विद दिस पार्ट. तो ये जो इमेज है, दिस इज डिपिक्टिंग इंडियाज यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इमेज हमको बता रहा है कि 2020, सो दिस इज टिल 31 मार्च 2020, मतलब एकदम लेटेस्ट वाला ये हमारे पास में सोर्स है. एंड दिस इज डिपिक्टिंग हाउ डिड वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हमने इलेक्ट्रिसिटी किससे ज्यादा बनाया. वी ऑलरेडी सॉ 3 थिंग्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहला था थर्मल यानी कि कोल. सेकेंड दैट वी सॉ वाज द एटॉमिक एंड द थर्ड वन विच वी सॉ जस्ट नाउ इज द गैस. तो इसमें अगर तुम लोग देखोगे, सो इंडिया इज स्टिल प्रोड्यूसिंग द मेजर परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कोल. सो अगर 100% है तो 100% में से अबाउट मोर देन हाफ, दैट इज 55.4% ऑफ द एटॉमिक पावर स्टेशन दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल पावर प्लांट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट. सो इंडिया जो है अभी भी इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया. लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल कंट्री यूज द कोल, स्टिल दे आर यूजिंग द कोल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी गो ऑन कंपैरिजन, इंडिया कुछ ज्यादा यूज कर रहा है. सेकेंड व्हाट वी सॉ वाज द न्यूक्लियर पावर. सो इंडिया जो है न्यूक्लियर कितना यूज कर रहा है, ओनली अबाउट 2%, बस 2% यूज कर रहा है. सो मतलब हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आधा टाइम खाली बैठे रहते हैं और बहुत कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है. सो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया for the generation of electricity is only 2%. Third, what we saw as a gas. So if you all see the last column is for the gas. तो ये गैस से हम कितना यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 7%. सो 55% is generated from thermal, then 2% from the nuclear and 7% from the gas. And let me tell you one thing, these all the 3 things which we are talking, that is the coal, and we are talking about the atomic energy, then the thing is gas. तो ये तीनों के तीनों क्या है, these things, 3 things are not good, they are non-renewable. If I say biologically, तो इन लोग नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी दे गेट डिप्लीटेड, तो उनको वापस लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. So we talked about the coal, atomic and the gases, and these 3 are non-renewable. And अगर मैं टोटल कर रहा हूँ, so easily I am getting कि 63 से 64% अभी भी इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स, विच इज नॉट गुड फॉर द इंडिया. और एक मैंने तुम लोग को शायद पहले बताया रहेगा दैट हाउ इरेशनली वी आर यूजिंग द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट इन नेक्स्ट 200 years इट विल बी फिनिश्ड. अगले 200 साल में ये खत्म हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट इंडिया दूसरों से खरीदना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, विच विल बी इवन कॉस्टलियर. तो 200 years is not too long, but definitely we won't be there to see all this scenario. So okay, so we have discussed about, let me show you the other things also because इसमें सब दिया है. Now see, we have hydro, that is the small hydro and large hydro. तो ये हाइड्रो का अगर मैं देख रहा हूँ, मतलब if I am using the hydroelectric power plant, as I told you, the dams and everything, so that is forming approximately 14%. 14% जो जनरेशन हमने पिछले साल किया था वो हमने डैम से किया हुआ था. विंड से कितना किया था, 10%, एंड सोलर से कितना किया था, 9%. सो इफ आई एड अप, सो 14 फ्रॉम द हाइड्रो, एंड देन वी हैव 10% फ्रॉम द विंड, एंड
then finally we have approximately 10% from sun, so that comes to 34%. नाउ यू ऑल कैन रिलेट, हमने नॉन रिन्यूएबल से कितना एनर्जी बनाया था, अबाउट 64% नॉन रिन्यूएबल से, और रिन्यूएबल से कितना बना रहे हैं, 34. वाई एम आई कॉलिंग देम एज रिन्यूएबल, बिकॉज विंड कभी खत्म नहीं होने वाला है, सोलर विल बी अवेलेबल टू अस 24/7, मतलब एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे. देन वी हैव द this last portion which is called as the biomass which I will be discussing. पर पहले हमारा ये तीन, I guess you all have understood. ये फ्लो चार्ट एक बार देख लो. You want to take a screenshot, you can take. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे. So let me give you all a comparison of यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, है ना, अमेरिका और इंडिया का, और आई कैन से कंपैरिजन बिटवीन अ डेवलप्ड नेशन एंड द डेवलपिंग. तो हमने यूज किया था अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% ऑफ द कोल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारा अमेरिका है भाई, ये खाली 30% यूज करता है कोल को फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज मैक्सिमम फॉर देम इज यूजेज ऑफ द नेचुरल गैसेस, दैट इज 34%. सो 34% नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस फ्यूम एंड द पोल्यूशन. एंड द थर्ड थिंग इज न्यूक्लियर पावर प्लांट. क्योंकि ये डेवलप्ड है, इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनका एटॉमिक स्टेशन, इनके पास बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब है, सो इनका न्यूक्लियर जनरेशन इज कंसिडरेबली वेरी हाई. इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. 20% एनर्जी ये लोग एटॉमिक पावर प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं, whereas we saw we are 10 folds less than them. हम खाली 1 से 2% बनाते हैं. They are forming 20% of the electricity using the atomic power plant. They are also using wind about 6%, which is equivalent to India. They are using hydroelectric, which is 6%. Solar energy is less 1% because they already are meeting their requirements from the nuclear and the natural gases. And solar capacity अभी कहीं पे नहीं बढ़ा है because it requires a great amount of investment. But still I can say कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूएस इज नेचर फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, क्योंकि खाली 30% वो लोग यूज कर रहे हैं कोल को. सो इन फ्यूचर दे विल हैव मोर कोल ऑल्सो टू यूज एंड द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो बी मेट. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अ डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड नेशन.